Alaikum and a very good evening ladies and gentlemen. आप सबका बरवक्त आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है तौसीक हैदर और एसपीओ की जानिब से मैं आपको फॉर्मली तो नहीं इनफॉर्मली वेलकम कहता हूं। थैंक यू वेरी मच और आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देता हूं उन साथियों को ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक एसपीओ से इन वन वे और द अदर फॉर द लास्ट 30 years है। एसपीओ 30 साल का हो गया तो बर्थडे तो बनती है लेकिन उससे पहले तालियां बनती हैं। आज हमने आपके सामने एसपीओ की कहानी, उसकी अचीवमेंट्स और उसका पाकिस्तान के तरक्की में, गुर्बत के खात्मे में जो हिस्सा रहा है उसकी कहानी सुनानी है। यह कहानी सुनाना आसान नहीं है इसलिए कि इसमें इतने किरदार हैं कि किसको स्टेज पे बुलवाएं और किसको छोड़ें, किसको अवार्ड दें और किसको ना दें, किसको वीडियो में शामिल करें और किसको ना करें। तो हमने यानी कि एसपीओ की पूरी टीम ने ब्लैक बॉक्स साउंड्स के साथ मिलकर एक ऐसी नशिस्त आपके लिए आज की शाम सजा रखी है जो अगले तकरीबन 3-4 घंटे तक आपको एक रोलर कोस्टर में लेके जाएंगे। कभी हम आपको वीडियो की सूरत में कुछ कहानी सुनाएंगे, कभी कुछ अहबाब से आपकी स्टेज पे मुलाकात करवाई जाएगी। हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल हम आगाज करना चाहेंगे पाकिस्तान के कौमी तराने से, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाना चाहता हूं। अमूमन जब इस तरह की नशिस्त में तराना चलाया जाता है तो कहा जाता है कि आइए अब कौमी तराने के लिए हम सब बाअदब खड़े हो जाएं, और हम सब खड़े होते हैं और अपने पाक देश से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसकी इज्जत और तकरीम और उसकी रिस्पेक्ट में तराना साथ गाते भी हैं। लेकिन आज एक ख़ास अंदाज में हम आपकी खिदमत में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बने तकरीबन 77-78 बरस हो गए और चागला साहब ने इसकी मौसीकी तरतीब दी इस तराने की। हफीज जालंधरी साहब ने इस तराने को लिखा। जब 68 बरस गुजर गए तो यह सोचा गया कि अब मौसीकी और विजुअल दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब पाकिस्तान के कौमी तराने को तब्दील नहीं हम कर रहे, लेकिन एक नए अंदाज में इसको तैयार किया जाए। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि एक इसकी कमेटी बनी और 4 साल के तवील अरसे में पाकिस्तान का कौमी तराना दोबारा से रिकॉर्ड किया गया, ऑडियो फॉर्म में भी, और उसका वीडियो भी दोबारा से तैयार कराया गया। आप सोच रहे होंगे आज एसपीओ की 30वीं सालगिरह है, पाकिस्तान के कौमी तराने की कहानी तौसीक साहब कहां से लेकर बैठ के। उसकी वजह यह है कि जब एक कमेटी बनाई गई जिसमें म्यूजिशियंस, वीडियोग्राफर्स, पाकिस्तान को हर लिहाज से जानने वाले एक्सपर्ट्स मीडिया के बैठे, उस कमेटी का हेड बनाया गया, उसका चेयरपर्सन बनाया गया मोहतरम जावेद जब्बार साहब को, जो कि हम सब के उस्ताद भी हैं, हम सब के गुरु भी हैं। और इनके सामने कभी मैं उर्दू बोलूँगा ये सोच करके शायद इसमें बच जाऊँ, फिर सोचूंगा कि पकड़ा गया तो अंग्रेज़ी में चला जाऊँ। आज की पूरी शाम जावेद साहब, तो फिर याद आएगा कि जावेद जब्बार साहब बैठे हैं, फिर वापस उर्दू में आ जाऊंगा। तो ये खेल तमाशा चलता रहेगा, आपकी इनायत रहेगी। तो जावेद साहब ने जनाब इस पूरी इस कमेटी को हेड किया और 4 साल के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना दोबारा से रिकॉर्ड हुआ। और ये इतना आसान काम नहीं था कि अच्छा गिटार वाले को बिठा दो, तबले वाले को बिठा दो और तराना दोबारा से तैयार कर दो। इसका एक पूरा प्रोसेस था और उसके बाद इसका पूरा विजुअल। सो इस वक्त 2 हुकूमतें बदलने के बाद इस कमेटी को और जावेद साहब की इस एंडेवर को विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन एंडोर्स किया गया और ये तराना इस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना ऑफिशियल है। ये कहानी सुनानी आपको इसलिए ज़रूरी थी कि वी आर सो वेरी ऑनर्ड कि आज जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की सरबराही में ये पाकिस्तान का कौमी तराना रीडू हुआ और रिकॉर्ड हुआ। अब आप सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में बाअदब खड़े हो जाएं। शा
आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से तलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। और अब हम बढ़ेंगे 3 होली बुक्स के तलावत से, उनके स्क्रिप्चर्स से। हम आज की इस नशिस्त में उन तमाम लोगों को, पाकिस्तान के उन तमाम सिटीज़न्स को भी शामिल करना चाहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी दीन, किसी भी मज़हब से हो, इसलिए कि SPO पाकिस्तान के लिए है। SPO हर मज़हब, हर फ़िरके, हर जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए है। आपकी खिदमत में होली बाइबल, गीता और गुरु ग्रंथ से कुछ इक़्तिबास। We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी। जैसा कि आज की तकरीब के आगाज़ में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आज SPO को 30 बरस हो गए और इसकी कहानी आज हमने आपको सुनानी है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी हैं इसमें, बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत से कामयाबियां भी हैं, जिसमें आगे बढ़कर हम जावेद जब्बार साहब से भी सुनेंगे और दूसरे साथियों से भी, और एक वीडियो की सूरत में भी कहानी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। लेकिन एक रिवायत है कि फॉर्मली वेलकम किया जाए उन तमाम पार्टनर्स को, दोस्तों को, कॉलीग्स को, फ्यूचर पार्टनर्स को और उन तमाम दोस्तों को जो कि इन वन वे और द अदर SPO की इस कहानी का हिस्सा रहे पिछले 3 बरस। और इस फॉर्मल वेलकम के लिए मैं मोहतरमा आरिफा मज़हर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वह तशरीफ़ लाएं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं SPO की। Am I visible? Assalamu alaikum ji. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and transgender persons, it is my utmost pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you on behalf of General Body, Board of Directors, and our Chairperson, Senator Retired Javed Jabbar Sahab, and Vice Chairperson, Manaz Fareed Sahiba. Well, I would say there are several names and individuals who are present in this hall who have contributed to extend the for SPO's success. But in the best interest of time, I would say that I won't be able to take the name of each and every one of you, but you have contributed to take the journey forward. Today we are united not just by the collective effort, but by the resilience and courage of our community leaders. And they are right there with us today, who in the face of hardship continue to
push boundaries and rise above challenges, whether tackling the effects of climate change, overcoming disasters, securing livelihood, ensuring access to education, or addressing health concerns. Local communities are at our heart of and our mission. Our work focuses the most marginalized segments of society, especially destitute women, transgender communities, ethnic and religious vulnerable groups, elderly and differently abled people. SPO remains steadfast to its commitment to building resilient communities. We believe in anticipatory action which could prevent or minimize the aftermath of disasters before they occur and respond swiftly when they occur. Despite the multiple challenges we face locally and globally, SPO has remained committed to serving the citizens of Pakistan. Since 1994, SPO has implemented 423 projects worth of rupees 12 billion, that equivalent to 41.96 US dollars, with the support of 106 partners and 4,000 community-based organizations that have contributed to impact the lives of more than 20 million people till now. Through our mental and physical health initiatives, our over 7,80,861 individuals have gained access to essential services. These are not just figures, they present lives saved, illness prevented, and communities that now have the healthcare support they once lacked. Our education program, which started in 2016 with 502 students, has now reached to more than 2 lakh students who now have access to both formal and informal learning. These children from underserved communities are no longer left behind. Sorry. Mic is not good? Okay. They are learning, growing, and preparing for a future filled with possibilities. Each classroom built, each teacher trained, and each child given the chance to learn a step towards breaking the cycle of poverty through education. Even during COVID pandemic, SPO has not stopped its work and ensured that ensured the education should continue through the digital platforms. Empowering citizens through good governance has been another milestone in our work. The ability to access fundamental rights and services starts with recognition. Almost 4,48,711 women and men now have their CNICs. This means they can now have an access to healthcare, education, and other services, financial services, or social protection programs. Economic stability is the foundation of a thriving society, and through our livelihood programs, over 11,81,267 citizens, including youth, have found new pathways to financial independence. These numbers reflect something far greater than mere statistics. They represent the mothers who can now provide their children, the students who dare to dream bigger, the workers who stand in their own feet, and the communities that are stronger and more resilient than ever. From a single office, we have now 29 offices nationwide. SPO has evolved from an implementing organization to also a management organization, ensuring effective strategic oversight, financial transparency, partnership facilitation, and risk management. As a management organization, SPO has implemented several impactful programs. Beyond the program execution, SPO has played a crucial role in strategic oversight and planning, ensuring that all activities and initiatives align with its broader mission and development goals. It effectively manages financial resources, ensuring proper allocation of funds, compliance with donor requirements, and financial transparency.
As an intermediary body, SPO bridges partnership between donor, implementing organization, government agencies, and local stakeholders, fostering collaboration. Its programmatic oversight and monitoring ensures that programs are implemented efficiently, meeting quality education, and adapting to challenges. Through risk management and compliance, SPO identifies potential operational, financial, or reputational risks to ensure adherence to legal and regulatory requirements. Additionally, it strengthens the capacity of local partners and implementing organizations through training and assistance, through robust monitoring and evaluation systems, and assess projects' impact, track progress, and gathers lessons from the future, for the future improvement. None of our progress would have been possible without the support of our community and donors. We are grateful for your trust, collaboration, and shared vision of a just and equitable society. Your support drives us forward, inspiring us to push boundaries, reach new heights, and work towards the collective transformation and empowerment of our communities. With immense gratitude, I once again welcome you all. Let us continue this journey together, united in this purpose and action. Thank you so very much. Thank you. Thank you, Arifa. Thank you very much. Bahut shukriya. As we were mentioning, that it is a story of 30 years, and some of you sitting here know this story by heart because you have seen it in front of your eyes evolve and become a success for the whole development sector of the world during the last 30 years. So now, ladies and gentlemen, I have the honors to invite one person who not only knows this story by heart of the last 30 years, but also has been an integral part of this story when it all started. So this is Mr. Tariq Binori Sahib. He's the co-founder and first chairperson of SPO. I think it's a prideful moment for Tariq Sahib also, with fond memories of the last 30 years. Bahut Mubarak. Thank you, Ji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Senator Javed Jabbar, Arfa Mazhar Sahiba, Sadka Salahuddin Sahiba, dear friends, colleagues. It really is a tremendous pleasure to see SPO thriving after 30 years. These 30 years have been the graveyard of institutions. Well-functioning organizations have collapsed because of factors that I need not go into. There has been immense corruption, there has been tinkering, and there has been hostility towards what can be called the independent sector that is the hallmark of all civilized societies. And yet, the number of organizations have survived, thrived, and flourished, and SPO is amongst them. Our congratulations and best wishes go to them. Well done. I'm not going to take too much time, but I do want to say a couple of things. I had the good fortune of being the first chairperson of the SPO. And thinking back to those days and reflecting also on the last 30 years, there are some tributes that we must make. And the biggest tribute I must make is to the person whose genius started this entire process, and that is Dr. Akhtar Hamid Khan. Dr. Akhtar Hamid Khan provided us with a new and innovative model, not only of collective action, but of development. I started the Comilla program, in which self-help, collectively organized people were used as the basis of transforming rural life in what was then East Pakistan, now Bangladesh. From there, he came and started the Orangi pilot project, another great transformative experience.
And then his student and friend and colleague, Shoaib Sultan Khan, took it one step higher into the Rural Support Program Network, and a number of other people. Javed Jabbar started Bambeli, the late Omar Asghar Khan started Sangi, there was things in Bhalwal, Tasneem Siddiqui started Khuda Ki Basti and Saiban. I mean, a number of things flourished. And not only here, F.H. Abid BRAC, the largest NGO in the world, is taken the ideas from Akhtar Hamid Khan Sahab from the Camilla program. I can also say that Yunus and Grameen Bank, which is now much more famous, drew its initial inspiration from these things. So I think this is a testament to the genius, to the transformative power of that individual who sees a vision, provides a vision, and then creates a whole cascading series of events that transform our society. I'm really feel that this is the time to remember and to honor people like Akhtar Hamid Khan and Shoaib Sultan Khan. Before I conclude, I do want to go into one other area, which is that it's really tremendous that SPO has survived and thrived and prospered. And my own institution, SDPI, also has survived the last 30 years, despite the kind of hostile terrain that it has been living in. But I would like to say, and say especially to Arfa Saiba, to Javed Jabbar, Sadka, that the time has come now to think of a bigger. Yes, we are in a hostile environment, and maybe it will become even worse. But we need to think of a larger scale. Think about Grameen Bank. It doesn't deal in millions of dollars, it deals in billions of dollars. Think about BRAC. It doesn't deal in millions of dollars, it deals in billions of dollars. I want to say, remember two other people in that regard, who I will quickly mention and then conclude. One is a person against from whom I've taken great inspiration. This was James Grant, the head of UNICEF in the 1980s. He came to UNICEF at a time that there was a little bit of pessimism about civic action and about the UN in general. There's an old saying that the UN doesn't solve any problems, it just gets tired of them, right? And you can say that about NGOs. The NGOs don't solve any problems, they just get tired of them. And James Grant said, no, we will solve a problem. And he set a target and he said, universal immunization. In 10 years, I'm going to get universal immunization. In 8 years, he got there. First time that he actually set a target and say, yes, we do a lot of things, but here is a target, everybody understands it. He says people have short memories, people have short attention spans. You need to give a clear target and achieve it, because that is a transformative thing. That's number one. That's one example that I want to give you. The second example is people, Yunus I already mentioned, Ashok Khosla in India, Michai Viravadia in Thailand. One of the things they taught us is that yes, we are public service organizations, but we have to use the power of the market. We have to use the power of the market. And all of them use the power of the market to transform their institutions, raise them to a much higher level than was considered possible. These two lessons I want to give to you. A clear target, this is what we will achieve, and use the power of the market. My hope is that you will be able to use them, and 30 years later, when other people, younger people, come and celebrate the next 30 years, they will see not only a transformation in the organization, but a transformation in the country. Good luck to you, and thank you very much. Thank you very much, Tariq Binuri Sahab. And to borrow your words and your quotation, people have short memories. They need clear targets. So I also have an assignment now to give you two, or maybe more than a couple of clear targets for this afternoon, this evening. The first clear target is that maybe you can
on your table see a QR code. You can go scan it, and that is the clear target if you want to know what's coming up this afternoon. That is our program, our agenda for the afternoon, for the evening. We wanted to save paper, although maybe the hotel management has a lot of papers that you can see on your tables. But we want you to use the QR code to understand what's coming up. Second clear target is if you could kindly put your phones on silent, because next 40 to 45 minutes are something very interesting coming up, and maybe the person sitting right next to you feels a little uncomfortable when your phone rings. The third clear targets, जैसे कि तारिक बिनोरी साहब ने कहा है, people need clear targets. The third clear target is that if you can see on my right side, पीछे आपको बहुत एक बड़ी light नजर आ रही है. It's a big, huge light. And that is a corner which has a photo booth. After the event, during the dinner, you can always go there, get yourself photographed, and while you step out of the hall, go back to your home, you will get a beautiful, nice souvenir of your printed picture. You can take a picture of yourself, and you can take a picture of somebody, a former colleague, a friend. 2-3 लोग मिलके भी तस्वीर खिंचा सकते हैं. So this is a touch and start photo booth, which will give you a beautiful memory that you were part of the 30-year celebrations of SPO. And while you leave the hall today, another clear target, and that is, do not forget to take that picture with you. वो print होके बाहर टेबल पे पड़ी आपका इंतज़ार कर रही होगी, और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत souvenir. अगर मेरा कोई कॉलीग यहाँ पे खड़ा हुआ भाग के जाए बाहर और एक खूबसूरत सा प्लांट पड़ा होगा, वो ला के मुझे दे, तो हम आपको बताएं कि एसपीओ ने इस बार आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल मेमोरेबल तोहफा देने का एहतमाम किया है, और ये तोहफा 30 years celebration में आपके साथ जाएगा. This is a plant that you must go back home. These are two actually. एक अपने नाम का और एक अपने किसी प्यारे के नाम का. ये एक पौधा है जो फ्यूचर में दरख्त बनेगा, और ये आपने साथ लेके जाना है. There's this pack for every one of you. इसको जाके घर में लगाइए, अपने दफ्तर में लगाइए, और एसपीओ का थैंक यू कीजिए. और जब ये दरख्त बड़ा होता जाएगा तो आपको याद आएगा कि एसपीओ जब 30 का हुआ था तो ये पौधा पैदा हुआ था. So these were some, not really instructions, but requests that I wanted to put before you. और अब we go into a very interesting experience, and that is that we have a documentary, a video for you, which is on 30 years of SPO. But we tried, Javed Jabbar Saab and Arifa and Maham and myself and the team of Black Box Sounds, we actually honestly, है ना जावेद साहब, हमने पूरी कोशिश की थी that we bring this to you in 30 minutes. 30 साल की कहानी 30 मिनट में हम आपको सुनाएं, लेकिन honestly possible नहीं हुआ, और we have exceeded 7 minutes. So here it is for you, 30 years of SPO in 37 minutes. Please enjoy, and I would request the photographers to please stay away from the main area so that everyone can enjoy and go back to the down memory lane. Please enjoy. We begin this narrative by sharing the names of those who have contributed to SPO's genesis and evolution. From the first volunteer board of directors, the volunteer general body and other volunteers, to the full-time CEOs and senior and junior staff, their commitment made it possible for us to traverse 30 productive years.
We acknowledge the valuable support extended by numerous partner organizations, which enabled us to fund our operations. In 1992, the Canadian International Development Agency, CIDA, made a pivotal decision to transfer its Small Projects Office to a new, exclusively Pakistani entity. The federal government, along with Co-Water, the Canadian Development Consultancy, provided critical support during this transformation. The first phase of this transition was led by 3 Pakistani citizens, known for their contribution to voluntary public service. These 3 individuals went on to invite 9 others from across Pakistan's 4 provinces and Islamabad to form the first Board of Directors of Strengthening Participatory organization. The new organization, registered as a Section 42 not-for-profit corporate entity, was established in 1994 with a commitment to sustainable, community-driven development. The name SPO preserved the original letters S, P, and O from the name Small Projects Office, the early Canadian-funded entity, to ensure continuity while setting a new direction for the future. By the end of 1994, the founding 12-member board identified 22 more individuals to form the general body, bringing the total membership to 34. This was the start of a journey shaped by collective action, collaboration, and a vision for a more inclusive Pakistan. The remarkable thing about SPO when I look back over 30 years is that through tumultuous times of national change and regional and global change, SPO remained consistent in its values, its mission and vision. Our work spans over immense critical thematic areas. These areas include education, healthcare, disaster prevention and response, which has been imperative in the Pakistan's recent past, women empowerment, which is an ongoing challenge for us, climate change, governance, which includes advocacy, digital knowledge transformation, and cultural heritage and promotion. Each individual initiative is designed to address Pakistan's evolving challenges, ensuring that our interventions are both timely yet deeply relevant. In the first 5 years, SPO set a fast, steady pace for innovation and growth. One of the early milestones was a Development Planning Management Program, DPM, a systematic training initiative aimed at improving the operational capacity of community-based organizations known as CBOs. This program provided a scientific approach to participatory development. It equipped local communities with the tools to assess their needs, identify resources, and implement sustainable development plans. The DPM process included intensive workshops designed to help CBOs evaluate local conditions, create feasible projects, and empower communities to make informed decisions. Over time, this program became a cornerstone
for SPO's approach to participatory development, empowering local leaders to take charge of their own futures. Another key innovation introduced by SPO was the Learning Information System, LIS, a pioneering computerized network for monitoring, information processing, and analysis. The LIS enabled SPO to collect and share accurate data on a range of issues, from women's participation in education to tracking student dropout rates in remote areas. This data-driven approach became a vital tool for social change, helping to target interventions where they were most needed. SPO also requested individuals of experience who enjoyed respect in their communities to become Learning Resource Persons, LRPs, whose intimate knowledge of local conditions and traditions helped shape harmonious, purposeful interventions for development. SPO also launched the Development Resource Center, DRC, the public information hub that became a key resource for partner agencies, NGOs, and CBOs. Through the DRC, SPO compiled the largest data bank on CSOs in Pakistan, with 8,733 organizations accessible through a single, up-to-date source. This resource provided critical information on NGOs' structures and programs, facilitating collaboration and enhancing the impact of community-driven initiatives. From the start, SPO's advocacy work was equally groundbreaking. It helped establish major coalitions of NGOs. These coalitions united civil society organizations to ensure the new laws regulating NGOs were fair and responsive to local realities. Through its leadership and resources, SPO helped these coalitions develop effective strategies for policy advocacy, ensuring the voices of local communities were duly heard. एक रिमोट एरिया में रहता हूँ, जिस सर्कल एक रिमोट एरिया है। यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि तालीम का कोई भी वजूद नहीं था सबसे पहले तो, लेकिन जब से यहाँ पे SPO आया है तो हमारे जो विलेजर्स के जो सोच है वो चेंज होती जा रही है। हमारे जो वालिदैन हैं वो फार्मर्स हैं, उनकी सोच ये है कि हम बच्चे पैदा करेंगे वो भी फार्मर्स ही बनेंगे, यानी कि हारी बनेंगे। लेकिन SPO ने इस माहौल को चेंज कर दिया, इस सोच को चेंज कर दिया। कैसे? मैं अब कैड कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरे जो दो दोस्त हैं वो IBA स्कूल सखर में, पब्लिक स्कूल सखर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी सोच थी कि हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले इस सोच को कोई वजूद नहीं था। जैसे कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब ये सोच ख़त्म हो गई। इसे हमने ख़त्म नहीं किया, बल्कि SPO ने ख़त्म किया है, इस माहौल ने ख़त्म किया है, इस स्कूल ने ख़त्म किया है। कि वो पाकिस्तान जिसको मैं SPO की नज़रों से देखती हूँ, वो उस तरह का जहनी पसमानदा नहीं है। बेशक उनके पास कपड़े एक दो जोड़े होंगे, लेकिन उनके जहन जाग गए हैं और वो समझते हैं और आते हैं, बात करते हैं, अपने हकूक़ मांगते हैं। अभी सिंध में मैंने पिछले साल देखा था कि जो आप यूँ कि समझिए कि स्ट्रीट चिल्ड्रन थे वो लोग, और ये अपने वालिद के साथ कोई रेडी लगाते थे, कोई काम करते थे। अब उनको स्कॉलरशिप्स मिले हैं, वो IBA के स्कूल्स में और आगा खान के स्कॉलरशिप मिले हैं, वो सब कुछ हुआ है तो वो जा सकें। वो क्यों? इसलिए कि उनको अवेयरनेस दी गई। वरना तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा ये ज़्यादा बेहतर है कि हमारे साथ काम करे, दिन के कुछ पैसे ला के हमारे हाथ में दे देगा। ऐसे गांव भी हैं हमने देखे हैं जहां से 9-9, 10-10 बच्चे एक गांव से स्कॉलरशिप पे गए हैं, और अभी वो बच्चे कुछ बने नहीं हैं, लेकिन गांव के आउटलुक से अभी से चेंज होनी शुरू हो गई है। छोटी उम्र में निकाह कर लेते थे, बाद में शादी करवा के, मतलब 10 साल से भी कम बच्चियों की शादी करवा देते थे। लेकिन अब उनकी सोच क्या है कि पहले पढ़ाएंगे फिर अपना घर बसाएंगे। जितनी भी छोटी उम्र की शादियां होती है और उसकी जितनी भी मुज़र असरात होते हैं, जिस बच्चे की शादी हो जाती है तो उसकी सेहत पर पड़ती है और उसके आने वाले बच्चों की पर पड़ते हैं। दूसरे हम कहते हैं कि किड्स हैविंग किड्स इज़ ए डिसास्टर। तो SPO का फोकस चाइल्ड मैरिजेस को रोकने पर भी रहा है।
एसपीओ जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में 2015 से काम कर रही है और टीबी का ये प्रोग्राम है जो कि गरीब के लिए प्रोग्राम है और फ्री ऑफ कास्ट ये प्रोग्राम है। इस 9 साल के अरसे में 1800 पेशेंट रजिस्टर किए हैं, जिसमें 94 से 95% पेशेंट जो है वो क्योर और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले ये था किसी दौर में हम सुनते थे कि टीबी का अगर कोई पता चल जाता था कि टीबी का पेशेंट है तो उसको घर के किसी कोने में उसको मतलब वो कर देते, उसके गिलास, उसका पानी का सिस्टम, खाने का सिस्टम, वो सब अलग कर दिया जाता था ना। एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुह से डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद में ये शऊर आया है कि अब वो जो टीबी का पेशेंट है वो काबिल इलाज है। ये टीबी हो गई तो इससे जो है काफ़ी रिश्ते भी टूट गए ना, फीमेल्स के, मेल्स के, लेकिन अब इस तरह नहीं है। अब ये काबिल इलाज मर्ज़ है। आप टीबी के पेशेंट से जितनी मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, वो टीबी का पेशेंट उतनी जल्दी जो है वो अपने आप को संभाल लेगा ना। जहां हमने बहुत सारे एसपीओ के साथ मिल के काम किया, पंजाब असेंबली में एक ये कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री पंजाब इज्तिमाई तौर पे पास किया और दूसरा पानी को बुनियादी हक तस्लीम करवाया। हम सबको इस चीज़ के ऊपर लेके आए कि जब पंजाब की आवाम की बात करनी है तो वो क्रॉस पार्टी लाइन करना है। मैं असदुल्ला हूँ, आई एम हेडिंग अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर। प्रोजेक्ट का नाम है पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। इसको हुकूमत पंजाब इसको इम्प्लीमेंट कर रही है 16 तहसीलों में पंजाब की। दैट इंक्लूड्स 6 मिलियन पीपल, और उनको साफ़ पानी देना और उन्हीं का जो सैनिटेशन है, जो गंदा पानी है उसको गांव से बाहर निकाल कर ट्रीट करके उसको फिर ड्रेन आउट करना है। लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है हमारा बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, जिसके अंदर एसपीओ इज़ पार्ट ऑफ इट। कि इन्होंने हमें हेल्प किया कि जो हमारे एम्बेसडर ऑफ चेंज आइडेंटिफाई करके जिन विलेजेस ने जिन्होंने कल को इस बिहेवियर चेंज को लीड करना है वो आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन बना के दी जो हमारी 12 से 15 अफराद में मुश्तमिल है। उस कमेटी के जो कंपोजिशन है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने आधे फीमेल और आधे मेल मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया। हमारा मौदा माड़ी नोन है और मौदा माड़ी नोन हमारा तहसील शुजाबाद का इंतहाई पसमानदा इलाका है। यहाँ MPA फंड ज़्यादा देते, कोई सोलंग दे दी, गली दे दी, नालंग दे दी। मसाइल हमारे जो हैं वो यहाँ के पीने का साफ़ पानी और ये निकासी आपका मसला, ये 50 साल से हमारा आ रहा था, किसी ने हल नहीं किया। SPO के नुमाइंदगान यहाँ है, हम तो नहीं जानते थे, उन्होंने हमें आगाही कि आप यहाँ अपनी तंजीम बनाएं ताकि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद फ़ाल करने के लिए उसमें आपका किरदार हो। तो फिर हमने पूरी मौज़े की आवाम को इकट्ठा किया, औरतें और मर्द, फिर वे दूसरे मेंबरान, उसमें फोकल पर्सन भी है, और ख़वातीन जो हमारी बच्चियाँ वो भी हमसे कम नहीं हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इतने पसमानदा इलाके में आज तक उनको ये सूझबूझ नहीं दी गई थी जो अब आई है। करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का फायदा कोई क्या नहीं जी टाइम तक सकूँ ये शायद पता ना होवे कि सहूलत सकूँ मिलती पई है, लेकिन इसका फायदा किवें जावणे उनके किते सकूँ जी शहूर दी है, गाई सकूँ दी गई है, वो SPO ने दी है। असल में जो जितनी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारी जो ADB स्कीम है, गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं, उनको स्टेटस ऑफ वुमेन चाहिए होता है पंजाब में कि हमने किस एरिया में काम करना है। उन्होंने उस एरिया में डेवलपमेंट स्कीम लानी होती है, तो उसमें जो SPO है वो साइड बाय साइड सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा है। इस साल हमें जो डाटा मिला है डाइवोर्स का, हेल्थ सेक्टर के इंडिकेटर है, जिसमें लिटरेसी के कुछ इंडिकेटर हैं वो हमने इम्प्रूव किए हैं, GBV के कुछ इंडिकेटर हैं। तो ये वो इंटीग्रेटेड जॉइंट एफर्ट्स हैं जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर स्पेशली SPO ने हमारे साथ मिल के की, जिससे हमने अपना जो डेटाबेस है, हमारी जो रिपोजिटरी है, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटाबेस है, वो हमने इम्प्रूव किया उसमें। और कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे ओवरऑल पैरिटी स्टेटस में भी हमने इम्प्रूवमेंट लाए हैं, क्योंकि हमने जब 20 का डाटा प्रेजेंट किया विद द सपोर्ट ऑफ SPO तो हम 21 में इम्प्रूव किया। ये वाला मॉडल KPK ने, फेडरल गवर्नमेंट ने,
सिंध ने, बलूचिस्तान ने, उन्होंने लिया है और इसी पैटर्न पे वो पैरिटी रिपोर्ट पब्लिश भी करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ कि ये महकमा 2008 में कायम किया गया था। ये जो मेरे सामने पड़ा है, ये इंसानी हकूक़ पॉलिसी 2018 का 2013-14 में ये जो पहला ड्राफ्ट ही SPO के तावन से हम बनाने में कामयाब हुई, और यही बुनियाद थी इस महकमे की एक स्ट्रेटिजिक या कह लेंगे एक डायरेक्शन में चलने की। तो SPO के साथ मिलके जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर SPO की हाउस होल्ड लेवल पे प्रेजेंस मौजूद है, हमने ह्यूमन राइट्स कैंपेन को न सिर्फ डिज़ाइन किया बल्कि इसको मिलके इम्प्लीमेंट किया। स्पेशली साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ हमारी मार्जिनल कम्युनिटी ज़्यादा रहती हैं, वहाँ टीचर्स की कोई ट्रेनिंग है, लोकल बेस्ड जो हमारी CBOs हैं या NGOs हैं उनकी कोई ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की कोई ट्रेनिंग है। पूरा पैकेज डिज़ाइन किया जिसको हम मिनॉरिटी एम्पावरमेंट पैकेज कहते हैं। तो नतीजे के तौर पे जब वहाँ से लोग पढ़ के आएंगे तो वो कमीशंस के अंदर या गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर हर लेवल पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं जब 5 माह की थी तो मुझे पोलियो हो गया था। तो अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी कि मेरी मदर ने ना मुझे एजुकेशन की तरफ लेकर आ गया। SPO के अंदर चूँकि सारी इदारियाती तरबियत होती है, लोगों को ग्रूम किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को ग्रूम किया जाता है, पर्सनैलिटीज़ को ग्रूम किया जाता है। तो SPO ने फिर इस तरह से मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। फिर इस सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की जब बुनियाद रखी और उसको रखा, तो इसमें जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड की, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवाई। ख़ासतौर पे तहसील की सतह पे जो मैं डिसेबिलिटी बोर्ड था वो नहीं हो पा रहा था, उसको इंश्योर किया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ उनको CNIC भी बनवा कर दिए। बहुत ज़्यादा नीड थी व्हील चेयर्स की, अफराद बहादुरी की। फिर उनको आइडेंटिफाइड किया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, और उनको व्हील चेयर्स और ट्राईसाइकिल प्रोवाइड की। और फर्दर भी हम उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ फर्दर प्रोग्राम्स के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं। असल में तो मुझे जो बात समझाई है SPO ने, वो राइट्स का समझाया। हमें नहीं पता था इससे पहले कि राइट्स क्या चीज़ है, कि हमें यही समझ आते थे कि हम डिसेबल हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके पता चला कि हकूक़ तो हर एक के हैं। सिंध में अगर सैनिटरी वर्करों के मसाइल की बात करते हैं, उसमें इनके मिनिमम वेज का इशू है जो इनको सिंध के कानून के मुताबिक नहीं दिया जाता। जो डीप सीवर में जाते हैं, गट्टरों की सफाई करते हैं सीवरमैन, उनको बाकायदा तौर पे हिफाजती सामान नहीं दिया जाता। SPO ने इस बात को, इस ज़रूरत को महसूस किया। इनके लिए लॉबिंग करने के हवाले से इदारों को ये एहसास दिलाने के लिए SPO ने किरदार अदा किया। इनके जो ग्रेजुएटी और पेंशन के मामला थे उसमें रियासत के इदारों ने तवज्जो दी, और बग़ैर सेफ्टी किट के अब डीप सीवर में वो नहीं जाते। ये इसका सारा क्रेडिट SPO को जाता है कि SPO ने सबसे पहले तो उनको बेदार किया और वो अपने लिए बेहतर रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस टाइम मुआशरे में तनाव बहुत ज़्यादा है। शांति नगर एक मसीही गांव है, और 97 में वहाँ पर कुछ इंतहा पसंदों ने पूरे के पूरे गांव को जला दिया, और बिल्कुल एक तरह से वो गांव ख़त्म हो गया था। उसके बाद काफ़ी सारी फ़लाई तंजीमें आईं और उन्होंने लोगों की वक्ती इमदाद की। 99 में जब SPO ने ज़िला खानेवाल में अपना काम शुरू किया, तो कबीरवाला में भी एक डेवलपमेंट प्लानिंग मैनेजमेंट का क्लस्टर बनाया गया, और वहाँ पे 10 तंजीमों को मुंतखब करके उन्हें ये कोर्स करवाया, ट्रेनिंग करवाई। 1 साल प्रोग्राम था। तंजीम साजी से लेकर प्रोजेक्ट लिखने, रिपोर्ट राइटिंग और एवेल्युएशन तक उन्होंने हमें सिखाया। जो गवर्नमेंट के इदारे थे उनके साथ भी उन्होंने हमारा राब्ता करवाया, हमें बताया कि आपने अपने अदारों को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है। उसके बाद फिर उन्होंने छोटे छोटे हमें प्रोजेक्ट दिए, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन और सैनिटेशन पे हमने इनके साथ मिलकर काम किया। प्लानिंग से लेकर उसकी आगे जायज़े तक में हम उनके लम्हा बलम्हा उनके साथ होते, ताकि उनको प्रैक्टिकली काम करने के अंदर आसानी हो। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो तंजीमें आज 24 साल सफ़र मुकम्मल करने के बाद, 25 साल मुकम्मल करने के बाद, इस वक्त बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपने अपने इलाकों में समाजी तरक्की का काम कर रही हैं। काफ़ी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जैसे वक्ती फलाह से हमने उस वक्त तो मुश्किल वक्त गुजार लिया था, लेकिन अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते। SPO ने यहाँ पर काम किया, रवैयों में तब्दीली। मुख्तलिफ मसालक के लोग एक छत के नीचे बैठकर मीटिंग्स करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये लोगों की एक बुनियादी ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि SPO एक ऐसा घना दरख्त है जिसकी छाँव में हम जैसे छोटे पौधे परवान चढ़ रहे हैं। SPO के साथ मिल के हमने वाइट इन फ्लैग के नाम से ये एक
बुक थी, जो कॉफ़ी टेबल बुक जिसे हम कहते हैं, हमने कोशिश की कि जो हमारा मिनॉरिटी सेक्ट है वो उसकी वर्शिप प्लेसेस का डाटा, उनकी तस्वीर वो हमने इकट्ठा किया, उसको एक कॉफ़ी टेबल बुक की शक्ल में हमने उसको डिज़ाइन करके ये लोगों के सामने रखा। इसका पर्पज़ ये था कि चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई आम पर्सन है, चाहे कोई डेलीगेट है, चाहे कोई नेशनल लेवल से या कहीं से भी है, तो कम अज़ कम हम उसको ये पेश कर सकें जिसके नतीजे में वो फौरी तौर पे ये जांच सके या जान सके कि पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली पंजाब के अंदर जो मिनॉरिटीज़ की खिदमात हैं वो किस तरह की हैं, किस नौइयत की हैं, किन किन फील्ड्स में हैं। एसपीओ के साथ 2005 से हमारी पार्टनरशिप है और पीपीएफ फंड मैनेज करता है और जो ग्रास रूट लेवल के पे जो मुश्किल काम है वो एसपीओ जैसे पार्टनर हमारे करते हैं। और 2005 से एसपीओ के साथ जो हमारी पार्टनरशिप रही है उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है एसपीओ की इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग डिज़ास्टर इन डिज़ास्टर हिट एरियाज़। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। और मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी के इदारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सर्विस डिलीवरी के अंदर भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और एसपीओ की जो स्ट्रेंथ है कि इन्होंने जो तंजीमें बनाई हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो सोशल कैपिटल बेसिकली इन तमाम की तमाम इंटरवेंशंस को सस्टेन कर रहा है। और जिन इलाकों से बहुत सारे इदारे निकल गए, एसपीओ जैसे इदारे अभी भी ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है कि जो अपने इलाकों में स्टिल कंट्रीब्यूट कर रही है और बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसके लिए हम एडमायर करते हैं, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। There is an active, engaged, volunteer general body and board of directors from diverse professional spheres, giving substantive time and skills, practicing a code of ethics to ensure integrity and transparency, and preventing the use of SPO facilities for personal benefit. Full-time professional staff are selected on merit with a high social awareness, who serve with humility and efficiency. SPO conducted regular, accurate documentation and publication of work and financial records. There is a rigorous internal audit and independent external audit. SPO's contributions were recognized at the highest level of the state and government, from President Farooq Leghari in 1997 to President Dr. Arif Alvi in 2019 at the Silver Jubilee event. Heads of state appreciated SPO's role in promoting the active participation of women and for empowering communities across Pakistan. They acknowledged SPO's transformative impact on education, healthcare, legislation, and minority rights. दो 2010 में पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब आया था जिसने चारों सूबों में शदीद तबाही मचाई। तो जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करते थे वहाँ पे लोगों ने हमें कहा कि आप हमारी सलाहियत तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इस मुसीबत के हालत में हमें कुछ और भी मदद चाहिए। हम चूँकि लोगों के साथ लोगों के लिए काम करते हैं एसपीओ, तो हमें ये तजर्बा हुआ कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान में कुदरती आफात आ रही हैं तो लोगों की वो सलाहियत और इस्तेदाद भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। लिहाजा एसपीओ के अंदर हमने डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिज़ास्टर रिस्पांस का एक छोटा सा यूनिट इस्टेब्लिश किया। इससे कबल 2005 के ज़लज़ले के वक्त भी एसपीओ ने मुतासरा इलाकों में बहुत काम किया था। तो 2010 में हमें यह तजर्बा हुआ कि हम मुल्की सतह पे चारों सूबों में जहाँ जहाँ सैलाब की वजह से तबाही आई तो हमने वहाँ पे लोगों के साथ काम किया। उससे एसपीओ ने खुद बहुत कुछ सीखा और हमने पूरा एक पैकेज डिज़ाइन किया कि लोग तबाही आने से पहले किस कदर उनकी रेजिलियंस को बढ़ाया जाए ताकि यही कम्युनिटीज़ इन मुश्किल हालात में खुद अपने आप को संभाल सकें। तो एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान ने इस सतह की तबाही नहीं देखी थी। सारी आलमी इमदादी इदारे जितने भी उस वक्त पाकिस्तान में मुतहरिक थे, हमने उनके साथ पार्टनरशिप्स की और चारों सूबों ने एसपीओ में चारों सूबों के अंदर लोगों की बहाली का काम शुरू किया।
और ये जो हमारी समझ और लर्निंग हुई उस पूरे प्रोसेस में, वो हमें बाद में कई मौक़ों पे जब भी कोई कुदरती आफात आए या लोग बेघर हुए किसी भी वजह से, तो एसपीओ ने हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लोगों की इस तरह से मदद करने की कोशिश की। खुद मकरानी की मिसाल दूंगा, एक दफ़ा वहाँ पे सैलाब आया, काफ़ी दुनिया से सामान आ रहा था और सामान जो था वो कुछ ऐसे लोगों के कब्ज़े में जाता कि वो बड़े बंगलों में चला जाता था। तो ख़ुद हुकूमत ने रिक्वेस्ट करके एसपी से कहा कि जी काम आप संभालें, और उन्होंने काम संभाला। यानी एसपी पे इतना एतमाद था कि हुकूमत को अपने अफसरों पे इतना एतमाद नहीं था। जो हमारा लीड टाइम है रिस्पॉन्ड करने का, वो इज़ विद इन डेज़, एंड दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिवन पाकिस्तान लार्ज साइज़ एंड जोग्राफिक स्प्रेड। और चूँकि एसपीओ की स्ट्रेंथ है कम्युनिटीज़ के साथ काम करना एंड डाइवर्स कम्युनिटीज़ के साथ काम करना, सो उसमें पहाड़ी इलाके के लोग भी आ जाते हैं, उसमें मैदानी इलाकों के लोग भी आ जाते हैं, रेगिस्तान के भी लोग आ जाते हैं। सो वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो इंटेलिजेंस ग्राउंड्स अप पॉलिसी में उसको रिफ्लेक्ट करना, I think again SPO has been very successful in making sure that policies are relevant to the context that where actual crisis happens. अगर हम कम्युनिटीज़ को इसके मुतालिक बताएं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज के बुरे असरात से बचा जा सकता है, किस तरह उनको मिटिगेट किया जा सकता है, तो लाजिमन इसका असर बच्चों की सेहत पर पड़ेगा। चाहे वो ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट हो, चाहे जेंडर रिस्पॉन्सिव और इंक्लूसिव प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो फिर न्यूट्रिशन जैसे टेक्निकल प्रोग्राम्स हों, फ्लड रिस्पॉन्स हो, या फिर कोविड-19 के दौरान जो हमारी मेंटल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल रेजिलियंस पे जो जिस तरह की प्रोग्रामिंग हुई थी, उस पे भी एसपीओ ने बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया था। सब इतने खेमा होया, झुगी होया, कच्चा घर होया, वो सिलाप में सब ख़त्म थी गया। वो बाद में मूंखे घर मिलियो, आसरो ना होयो, असांखे घर मिलदा। हर कोई लिखे वेंदा होया, कोई ॾींदो ना हुयो। कोई एसपीओ की टीम आयो, पोइ उन ॾिनो, घर ठाहियो, पोइ असांखे यकीन अची वियो हाणे असां बिल्कुलु महसूस है। फिर यहाँ ये हिंदू महाराज, यहाँ ये गोठ बनाया, नाम दिया हम लोगों का। यहाँ पहले नाम नहीं था हिंदू महाराज का। बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। Not many organizations, because a lot of organizations look at it as a technical problem. It is a technical problem also, but when it comes at a level of people, so it becomes a social problem also. And वहाँ पे फिर जो है वो faith becomes very interesting channel in terms of creating awareness, creating elements of response. तो उसमें बड़ा यूनिक प्रोग्राम जो है वो एसपीओ ने रन किए हैं, जहाँ पे जो है वो इंटरफेथ डायलॉग्स जो हैं have become climate conscious dialogues. ग्रास रूट लेवल तक लोगों में ये अवेयरनेस जो है पैदा की है कि हम क्लाइमेट चेंज में मतलब मिटिगेशन और एडाप्टेशन में क्या मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कब कहाँ तक हम इसके जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें हर लेवल पे जो है एसपीओ ने ये कोशिश की है कि हर तबके के लोगों को उसमें शामिल किया गया है। जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करना, जो प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह वो सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे, या हम किस तरह लोगों को अवेयर करेंगे कि प्लांटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। एसपी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत मौक़ों पे, वो चाहे डिफरेंट फेथ लीडर्स को इन्वॉल्व करना हो, या जो हमारे यूथ हैं उनको इन्वॉल्व करना हो, या हमारी जो ख़वातीन हैं उनको इन्वॉल्व करते मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने प्लांटेशन ड्राइव की है। मैं एक ज़माने में मेरी पोस्टिंग तुर्बत में थी और वहाँ पर मुझे एक साहब ने ये किस्सा सुनाया था कि आमतौर पे गाड़ियाँ लिफ्ट कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो एक डाकू साहब जो थे उनका कहना ये था कि जी एक 75 लाख की गाड़ी गुज़रती है यहाँ से और उसमें एक कमज़ोर सी लड़की बैठी होती है। हमारा बस नहीं चलता कि हम ये गाड़ी चुरा लें या छीन लें, लेकिन अफसोस ये है कि ये गाड़ी एसपीओ की है। यानी उस वक्त इब्तदा में ही एसपीओ का नाम इतना फैल चुका था, और ज़ाहिर है कि नाम जब फैलता है तो उसके काम की वजह से फैलता है। इतना फैल चुका था कि डाकू तक उसका एहतराम करते थे कि ये हमारे इलाके में काम कर रहे हैं,
एसपीओ जैसे इदारे मैं समझती हूँ कि उन्हें पूरे पाकिस्तान के लेवल पर जिस तरीके की एडवोकेसी की है एज अ फ्रंट लाइन एक्टर फॉर एडवोकेसी, बट नॉट ओनली दैट, बट उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल के इदारे हैं और CSOs हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड की है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू दी एडवोकेसी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनफैक्ट SPO इज़ अ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन एट दिस टाइम, तो उन्होंने इस रोल को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया है। At the heart of SPO's work has always been a commitment to women's equitable representation. From its earliest days, the organization has ensured that women are represented equally in both the general body and the board of directors, and optimally among full-time staff. SPO has been able to facilitate vital fieldwork and create spaces for women to engage in community decisions in rural areas, where traditional practices often limit women's participation. SPO works gently yet persistently to encourage the formation of women's groups, to empower them to make collective decisions that shape the future of their communities. For 30 years, SPO has been more than an organization. It has been a catalyst for change, from capacity building workshops to pioneering technological innovations. From local advocacy to national policy reform, SPO's work is driven by a single unwavering principle: to create an equal, just, and sustainable society. I would say that today SPO is not only an implementing but transitioning into a management organization as we experience that institutional strengthening remains challenge for many small organizations, and this is where SPO plays a crucial role in bridging up the gap between the funders and the implementing organizations. So this dual role allows SPO to continue its core mission of implementing impactful programs while also taking on a more strategic management driven approach. As an implementing organization, SPO remains focused on executing development initiatives, and at the same time, the journey towards the management organization empowers us to take on a greater responsibility for overseeing projects, managing resources efficiently, and ensuring sustainable and building long-term organizational capacity. As SPO looks to the future, it remains steadfast in its mission to build better Pakistan, one where every voice is heard, every community is empowered, and every individual has the opportunity to thrive. And lastly, we are proud of the fact that while we succeeded, we have also failed, and we have learnt from those failures. So I look at the next 30 years as being equally, if not even more tumultuous, more challenging. And I'm sure that those who come after us will be far better than what they have had to suffer through persons like me, for example. SPO ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ SPO ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ SPO ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਧਾ, ਇੱਥੋਂ SPO ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ 31-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ SPO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ
लाइट्स ऑन कर। जी जी बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। आपको तो हमने पहले आपकी तकरीर भी सुनी है, फिर वीडियो में भी आपको सुना है, अभी कुछ रह गया है आरिफा? बस कुछ रह गया, थोड़ा सा रह गया। जान की अमान पाऊँ जावेद साहब, तो मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस खुद से ही कर दिए आपकी इजाज़त के बगैर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज एसपीओ का 30 साल पूरे हो चुके हुए हैं, और हम सब ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे को-फाउंडर्स बैठे हुए हैं, और उनमें से एक जावेद साहब का नाम है, जिन्होंने पूरे 30 साल सर्व किया है ऑन अ वॉलंटरी बेसिस एसपीओ में एज अ चेयरपर्सन फॉर अबाउट 10 years, एंड उसके अलावा बहुत इन्होंने मेहनत की है हमारे साथ। इनकी विजनरी लीडरशिप, इनका हर वक्त हमारे साथ हर तरह की सपोर्ट जो हमें चाहिए। आप यकीन कीजिए, जब हमारी एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं तो जावेद साहब उसकी एडिटिंग एक एक पेज, एक एक लफ्ज़, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप देखते हैं। हर वक्त जब भी हमें ज़रूरत हो तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर। और मैं चाहूँगी जावेद साहब के, मैंने जो टीम ने मुझे लिख के दिया है मैसेज, वो मैं पढ़ के सुनाऊँ आपके लिए। जो आज हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये 30 साल मुमकिन ना होते इस तरह से, जिस तरह से हमने प्रोग्रेस की है, जो हमने आपको फिगर्स बताए हैं, जो एडवोकेसी की है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बच्चों, ख़वातीन, वल्नरेबल ग्रुप्स के हवाले से। उसमें जावेद साहब ने जिस तरह से विज़न और मिशन को आगे लेकर चले हैं, और हमें भी उस पर उसी तरह से कायम और दायम रखा है। हम अक्सर कहते हैं कि फ़ंडिंग नहीं है तो ये वाला प्रोजेक्ट ले लें, तो बोलते हैं कि नहीं, ये वाला विज़न के साथ मैच नहीं करता, या आपके मिशन के साथ उस तरह से जाता नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि हम आज वो रिकग्निशन और अप्रिसिएशन आप सबके सामने जावेद साहब को दें। Thank you so very much, Javed Saab. You have always been an inspirational force for all of us. ये 2 दिन हम लोग पिछले कई दिनों से एक एक मिनट में हर वक्त जावेद साहब को तंग कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम ऐसे नहीं, ऐसे ठीक चलेगा। तो वो हमें हर वक्त हर तरह की सपोर्ट जो है वो दे रहे होते हैं। मैं चाहूँगी कि सर अगर थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ लाएं। और वो 30 साल से जो हमारा स्टाफ है जो जावेद साहब को झेल रहा है मेरे समेत, मैं चाहूँगी कि वो भी तशरीफ़ लाएं। स्टेज पर मैं आरिफ फ़ारूकी साहब को, जो पहले दिन से एसपीओ के साथ मौजूद थे और अभी भी ये अबे मियाँ के नाम से मशहूर हैं। अबे मियाँ, ये कब होगा, कैसे होगा? इसके साथ मैं बेशबीर आपको भी इनवाइट करना चाहूँगी। और ये जी प्लीज़ आइए आप। शाहनवाज, अमजद आप भी आएँ, महराब आप भी आइए। ये सारी एक्टिविटी जो है वो ना किसी तो जीबी मेंबर को पता है, ना बोर्ड मेंबर्स को पता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम एसपीओ स्टाफ। मुझे तो बता देती। आपको क्यों बताते हैं, आप सरप्राइज़ तोड़ देते हैं आप। सो अमजद आइए प्लीज़। हम सब स्टाफ की तरफ से एक शील्ड प्रेजेंट करना चाहेंगे जावेद साहब को। तो शील्ड लाइए प्लीज़। जी काशिफ, किधर है शील्ड? देख लें कितने मर्दों में एक खातून है। आगे से
और पता नहीं कोई कैमरा हमारा इस केक को कवर कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर देखें आरिफा, अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं प्रोडक्शन टीम को कहता यहाँ ऊपर एक कैमरा रखे ताकि इसको कवर किया जा सके। But this is a beautiful cake and I will read it out to all of you. It says, celebrating 30 years of public service by SPO with our partners, Javed Jabbar Sahib, in the honor of your 30 years of your voluntary service to SPO. Thank you very much. जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, ये सबको मिलेगा, डोंट वरी। और ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आप सब के साथ शामिल होते हुए मोहतरम जावेद जब्बार साहब से कहूँगा कि वो आप सबसे बात करें। सर। Thank you very much. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. You know, this program was supposed to be reviewed, every aspect of it, and I have full responsibility for any of the lapses. Lekin keeping in tradition in Pakistan, sazish, yes, sazish thi, so it was not imposed on you by me, please be rest assured. तो साजिशी जो पहलू है पाकिस्तान का आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा. But some sazishes we like, and I'm deeply moved. Arifa, thank you very much, and the whole staff, the team of SPO. Such a pleasure and a privilege to be associated with you all. And this evening, I am here, distinguished guests, we welcome you on behalf of SPO, those who are here as our honored guests, our partner donors, our community partners, our staff, senior and junior, old and young, and guests, honored guests, all of you. Thank you very much for sparing the time and being with us on this very auspicious occasion for us. I also want to thank those who are not here, who have sadly departed, as all of us must at one point. But we have tried to honor them by naming them in the documentary. Most recently, in October, just about 4 months ago, we lost Sayyid Abid Rizvi, who has featured in the film, who was an inimitable part of our team, a ripe young man till the very last, who attended every single board meeting and general body meeting, beat me even to it because I had to miss a couple. What a loss it was. But he made such a great contribution and set the standard for all others. So I'd like to thank you all collectively, and you have seen some of the glimpses of what we did. So I'm not going to repeat the successes that we think we have achieved, thanks to our collective efforts. I will briefly refer to the 3 failures which I think need to be remembered. I mentioned the failures at the very end. What did we learn from them? I'm not going to elaborate as to what we learned, but I want to mark those failures. Well over a decade ago, we felt that we should reach out to the Pakistani diaspora across the world, and we should start to offer SPO's experience to that diaspora community. And we chose the United Kingdom, where we have a very large and diverse diaspora. It was a great learning experience to visit so far inaccessible parts of the communities, and to learn to our dismay that even in the United Kingdom, there are women in the Pakistani diaspora who are disempowered. Whether it is the fact that many of them do not even have proficiency in English, which is the language of the country they live in, or whether because they suffer different discriminatory practices. So we strove, we did whatever we could
Some of us traveled at our own expense instead of burdening the SPO budget. Dr. Tufail being a prime example, Sadika Salahuddin was another. And we did our best to create SPO UK. We succeeded in many respects. We created networks with members of the House of Commons, the House of Lords, community leaders. But alas, for whatever reasons, we were not able to sustain it. And I hope that in future, in the next years ahead, we are able to make more progress there. The second area where I think we failed is in our attempt to set up a social democratic enterprise company, which was meant to be a not-for-profit company like us, but in the hope that we would be able to generate enough income from that company to gradually reduce our dependence on external funding. So we called it SDE, and we engaged a professional to head it, and we attempted to explore different areas of enterprise that had a social significance, but could also generate income or profit from us. In that respect, despite our best efforts, we could not succeed. The third failure, or perhaps an attempt that is still in process, is to reduce our dependence on overseas donors. And when I say overseas, we don't treat overseas donors as alien or unfriendly sources. They are very friendly, they're giving us aid, but we live in a country that has been unfortunately made addict to foreign aid and foreign loans. And we wanted to reduce that. And I don't think we've succeeded entirely. Fortunately, we have entered into partnerships with indigenous, Pakistani, state and private sector institutions. And that pace is picking up, as you may have noticed in the list that we featured in the documentary. One prime example is seated with us here, the CEO of OGDC, Mr. Luck, who, as you will see later, is very actively engaged in furthering an outreach to the community. But we hope that that will pick up steam and we will be able to go forward with gradually reduced dependence on overseas support. I look at the next 30 years as posing challenges which are far greater than the challenges that we have overcome. The first of these is population growth. After 30 years from today, we will be a nation, mashallah, at the rate at which we make babies, which is our favorite pastime. We will be over 330 or 350 million people. 350 million people. Even if I'm wrong by 20 million, we cannot afford even 300 million people. With 24 million children out of school today, the estimate is that we will have 50 million children out of school in the next 20 to 30 years, at the rate at which we are going. So that is one area where I hope SPO goes in full steam and does whatever it can to ensure balanced population growth. The fertility rate has declined over the past 30 years, but it's not enough. The second is education. The attainment of genuine learning, not the passing of exams, not just the setting up of structures as schools and universities, but true learning, critical thinking, independent thinking, and knowing that students are no longer dependent on learning within the classroom, but the classroom of life is so exponentially growing that those children are learning much more and absorbing much more outside the institutions. And the content of
conventional education has to catch up with the real world outside. That's another great challenge. And the third and the last one, before I relieve you of my presence, is citizen-led development and progress. Citizen-led, which doesn't mean that we can afford to be without leaders. But in a country where the current institutional miasma, the breakdown of institutions, what we are witnessing with the judiciary, with the mockery of the rule of law, with the mockery of election results, with the suppression of freedom of expression, it's going to be a tremendous challenge for SPO. How do we retain our goodwill and cooperation with the state and the government, which can easily see any attempt by us to articulate positions on these issues as being hypercritical or antagonistic towards the state, which we don't want to be. But we are at the same time living in a country where that very same state is enforcing the law. And where we also see, as Tariq Banouri correctly mentioned, the threat to civil society organizations and to NGOs as a result of FATF or our own internal paranoia, the challenges that organizations like this face, excessive intrusion and irrational demands for inquiry and investigation, needless documentation, which is so wasteful. So we have to walk a tightrope, maintain confidence and strong relations with the state, with all four provincial governments, and at the same time be a rational, independent, balanced critic in a constructive way to prevent Pakistan's collapse, not in an infinite sense, because we are so gifted as a people, we are so vibrantly talented. In every village and town that we work in, you see the magnetism of our people, whether they're illiterate or educated. This country has phenomenal talent. Forget the mineral resources and the physical wealth. The human capital of this country is already so vibrant and pluralist and so beautiful. So this country deserves far better than what it presently has. And the citizen must learn to lead the way. And I hope that we will do it. Thank you all for your patience. All the very best to you. Thank you. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया Mohtaram Javed Jabbar Sahab. Thank you for your keynote speech. You always give us a new dimension when it comes to vision and mission of SPO and the society and this country at large. Where is it heading towards? All right, friends, ladies and gentlemen, now we quickly have to move into two panel discussions. As you must have heard, and most of you already know, that SPO has very strong partners over the years, have contributed towards development of Pakistan, not only along with these partners. So we have two sets of panels, and to invite my first panel, I would like to request our speakers to share their experiences of working with SPO. They will come on stage and share their experiences on its transition, especially from an implementing partner to a management organization. So this is where it started from, as an implementing partner, as a small little NGO, now as a management organization, the grant management and general management organization. So I'd like to invite, first of all, from British Council, Mr. Afan Javed, Regional Head of School Systems, South Asia. Afan, if you could please come on stage and join us here. Mr. Abdul Kabir Qazi, former Managing Director, Sindh Education Foundation. Guys, please tashrif laiye. On the left. Guys, welcome. Thank you very much.
I would like to invite Muhtarama Saleha Rame Sahiba. Saleha is Technical Specialist, GPV, UNFPA Pakistan. Saleha, please come and join us on stage. Also, I would like to invite Mr. Ahmed Hayat Laksa, Managing Director and Chief Executive Officer, CEO of OGDCL. Laksa, please come and join us. Please. And Mr. Barkat Ali, former team lead, Oxfam. Barkat Saab is there he is. Thank you, Barkat Saab, for making it here today. And to lead this honorable panel, I would like to invite Mr. Fawad Somro, a long-standing colleague and a friend of SPO and member board of directors, SPO. Fawad Somro Saab, please come and lead the panel as the chair. Over to you, Fawad. Tawseeq, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us in today's event. Tawseeq ne introduce bhi kara diya hai, top ke baare mein bata diya hai. I think he has done half of moderation already. So we will jump straight into the question. So something that we want to hear from you, the esteemed panel, long-term partners of SPO, कि आप ये transition कैसे देखते हैं? You know, SPO from being just an implementation organization to evolving a higher role of a management organization whereby it will play potentially a role between donors and implementing organizations, because as we have seen, there are challenges in this space and not too many people have this expertise. So I guess question will remain the same, so we can go in sequence, and we'll start with ladies first. So please, we can start with you. Thank you. I think first, congratulations to SPO for completing 30 years of excellence, and thank you for remembering the partners to be part of this very beautiful ceremony. I think the partnership of SPO with UNFPA has been very critical, because we work in the area of gender-based violence and child marriage, as it was mentioned in the documentary as well. So when UNFPA and SPO started partnership during the 2022 floods, so basically not very much either the government or the implementing partners were focusing this area. So with a very small funding, actually, UNFPA and SPO started the work in the communities and started establishing women and girl-friendly spaces. So they might not sound like organizations, but they were in spaces in itself. They were supposed to provide safe space to women and girls to come and not only to access services like health, education, but to it was a center point to connect women and girls with essential services of gender-based violence, like shelter or other things that they might need. And the key services were psychosocial support and the protection services. So there, SPO's kind of excellence in one excellence was the presence in the community and the relationship with the community and the district administration. The second, I think the best part was the management of the funds. I mean, the policies that the SPO had, it actually built strong trust in the partnership that with the flow that the funds were coming in, they will be managed with proper ethics, audit. And the third, I think the strength that I observed was the team that the SPO has. From Arfa to Yasir to Shahnawaz Saab, I think everyone are kind of people who know their subject, and also the flexibility with which we were working. Because when you work on this issue or when you work on disasters, everything is not as you would plan. So on everyday basis, the flexibility while having strong policies was the best thing that I enjoyed while working with SPO. Thank you. Thank you, Ma'am Sarayat. Qari Saab, please, if you could reflect on, share your thoughts. Thank you very much. सबसे पहले तो congratulations for such a wonderful presentation and documentary.
And sir, your voice stood out again as my experience with the ACF has been as Managing Director of ACF since April 2019. In last 6 years or so, and since this was purely education side, so I will be speaking from the education side. With a huge number of children outside the schools is of course a major issue where we all have been striving to bring some change and to do whatever better we could do. लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो है उसके अंदर अभी ये है कि as per certain reports, more than 47-48% children are not learning properly. They are victims of learning poverty. And according to another report, the World Bank report, 70% of the 10-year-old children, they can't read the text which is appropriate for their grades. Now this is, I think, this situation has aggravated what the in education sector we have been facing. So learning poverty is probably the major issue than the children bringing to the schools. If we just bring them to the schools, it is better first to improve the learning of who are in the school, already in the schools. Second is we just see in last few years the two traumas that we have gone through, the COVID and then the floods. And still, as we just saw, the 1/3 of the Pakistan was underwater. The Pakistan still is 8th most vulnerable state in the world as far as the climate change is concerned. Now, all this thing has actually revealed the fragility of our education system, how fragile it is. And who is the victim? The children. Whatever the disaster, whether it is natural disaster or it's a man-made disaster, the first victim of every disaster is the child and then the women. So that is one thing where I would really like to appreciate how SPO stood out. And they were there to not only for the hand-holding, but actually coming forward and helping the children and the mothers and the victims of these two disasters in the past. This documentary also showed the data that SPO is collecting. On the overall education sector, if we say what is missing in our education sector is a coherence in the policy making. We have not developed as in the policy making. We have somehow probably वो जो एक बुक लिखी गई थी मर्डर ऑफ द हिस्ट्री, वो अभी मर्डर ऑफ हिस्ट्री पे ही अभी तक हम रो रहे हैं कि ये मर्डर कैसे हुआ था. हम आगे नहीं चल रहे कि हम कुछ इम्प्रूव कर सकें. एंड इफ वी हैव टू इम्प्रूव वी नीड डेटा. नाउ डेटा, one question is whether the data is available or not. But I believe, as we just learned in today's documentary, that some kind of data is there. And various government organizations are already working and producing data. So then becomes the second question. If the data is there, then why the data is not being used for the policy making? Now, as we saw in this documentary, and as the data is available with the Sindh Education Foundation, with the UNICEF, with the JICA, with so many other organizations, this all data is very primary data. So this data is actually evidence that what's happening on ground. Then why the government has not been able, governments, I mean federal or the provincial governments have not been able to use this data for the policy making. Even in, for example, this year's budget, last year we announced education emergency. But do we see any projects in this year's budget of any province or the federal government which is actually a database or evidence-based project for the improvement of education? No. So that is another thing where SPO can help. SCF as an organization, SPO, such organizations can get together and they can help government in providing the data which is required by the government for decision making. So that's what I wanted to say about this. Thank you guys for raising the right questions. They were difficult questions, but very important ones. I'll move on to Afan Saab, if he could share some thoughts with us. Thank you, Fawad Saab. First of all, I would begin by congratulating SPO
on their 30th anniversary. It's a huge journey, and by just being present in this room, you can feel the energy, the passion, and engage with so many voices that we have all seen in our little parts of that journey, but actually witnessed that energy. And it's also, I'm also enamored by being in the presence here of visionaries such as Javed Jabbar Saab, Sadika Salahuddin Saiba, Tauseek, and Arifa, and everyone who has been part of this. British Council has partnered with SPO not only once, but I think in multiple occasions, in multiple spaces, because as organizations, our vision align. And most recently, the partnership that I'd like to discuss here, which we are very proud of, is the partnership for managing Awaaz Do program. Awaaz Do program started in its phase 1 with British Council in Multan, and then it expanded in Bihari and Khanefal. एंड इसको मैनेज करने में, क्योंकि मैं इसका प्रोग्राम मैनेजर भी था ब्रिटिश काउंसिल से, तो मेरी शायद रिफ्लेक्शन थोड़ी डीपर होगी. जब पहली दफ़ा शाहनवाज साहब और मैम आरिफा आए थे हमारे दफ्तर में, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन आवर budgets, our vision and all of that. I think the first thing I said to Ma'am Arifa at that time was, आप हमारे साथ चलें तो सही, and let's see where it goes. And it will expand. And Rafat भी यहाँ पे बैठी हैं, Rafat Yasmin, who's been working with SPO very directly, Dr. Yasmin, Arshad, all of our colleagues. The one thing that we all felt was that our vision was aligned with that of SPO's. And we started with just merely one intervention, which was initially in Multan. हमने सोशल बिहेवियर चेंज के प्रोग्राम को इसी मॉडल के ऊपर जो अख्तर हमीद साहब ने रखा है उसके थोड़ा सा ऑल्टर करके हार्मफुल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए और मार्जिनाइज लोगों की आवाज़ों को एम्पलीफाई करने के लिए काम की बुनियाद रखी. स्लोली एंड स्टेडीली दैट वर्क इम्प्रूव्ड. और जस्ट अगर मैं नंबर्स के उसमें जाऊं तो हमारे 60 विलेज फोरम्स बने इसके तहत. ब्रिटिश काउंसिल इज़ वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ द वर्क दैट हैपेंड. हमारे आवाज़ आगाही सेंटर्स बने, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इस्टेब्लिश हुए, और उसके अलावा हमारी शांति नगर जैसी जगह पे हमारा जो एक रिज़ल्ट था जिसके बारे में बहुत प्राउड थे, विच वाज 100% बर्थ रजिस्ट्रेशन विच वी वर एबल टू अचीव थैंक्स टू द पार्टनरशिप ऑफ SPO. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग एंड इट बिकेम अ गोल फॉर अस कि जैसे शांति नगर में हम 100% बर्थ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे, जैसे यहाँ पे बात हुई कि हदफ रख सकते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस ख़त्म करनी है या कोई चीज़ है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं. तो दैट वाज वेरी गुड. इसी में फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी, जिस पे आरिफा भी बात कर रही हैं, आपने भी सवाल पूछा कि इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर से हमने मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सफ़र कैसे करना है. तो जो सेकेंड फेज़ जब शुरू हुआ तो उसमें SPO हमारे साथ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक एडिशनल काम हमारे साथ पिकअप किया विच वाज एज अ रिसोर्स पार्टनर. तो वो इन सिर्फ उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे उससे निकल के वो 15 डिस्ट्रिक्ट में एज अ रिसोर्स पार्टनर हमें ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने बाकी सारे पार्टनर्स की कैपेसिटीज़ को, उनकी मटेरियल्स को, उनकी टेक्निकल सपोर्ट को भी देखना शुरू किया. सो ब्रिटिश काउंसिल नॉट ओनली बेनिफिटेड फ्रॉम देयर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट, but also saw them transition into that management role and in that wider impact that I think the organizational vision for SPO was as well. और उसमें I think 2-3 चीज़ें मैं उनको like just because it's a good thing कि as they transition into it, they have now an opportunity to create impact at a much higher scale, because they're not looking at just themselves as one organization, but they're looking as sort of a conduit for many organizations. So with this transition, they would have better financial sort of appetite to take risk. They can invest in topics that they really care about without feeling the donor pressure, and they can grow into things which they feel and they know by their work that mean a lot more to Pakistan. And I think British Council will continue to support that, will be part of that journey, and we are very grateful for the partnership that we have already enjoyed. So thank you so much.
Thank you very much, Khan. We greatly appreciate the partnership with British Council, and you rightly pointed out the help that we have gotten in our evolutionary journey. So, sir, you're next, and please, if आप भी जो हैं वो हमारी एक बहुत long term partner organization को represent कर रहे हैं, so if you could share some thoughts. मैं जब SPO 12 साल का था तो उस टाइम पे एक इंटरेक्शन हुई थी, फिर जब 27 साल का हुआ तो उस टाइम पे दूसरी इंटरेक्शन हुई एज अ पार्टनर। तो 12 साल का मेरा मतलब ये कि जब 2005 का ज़लज़ला था उस टाइम भी मेरा पहला टेन्योर था ऑक्सफैम में, और वहाँ पे SPO के साथ हमारा रिहेबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट था ऑक्सफैम का वो कश्मीर में था, आज़ाद कश्मीर में, बाग और नीलम में। अभी मैंने उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी गुजरते हुए देखा, कहीं और अभी है। शुक्र है, ये बहुत बड़ी दुनिया नहीं है हमारी डेवलपमेंट सेक्टर की। फिर दूसरा जो एक्सपीरियंस था वो भी ऑक्सफैम के साथ था, ये 2022 का फ्लड था। मेरी नज़र में जब स्टार्ट था, जो मैं ट्रांजिशन को देखता हूँ, SPO स्टार्ट हुआ था एज अ एडवोकेसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ह्यूमैनिटेरियन का जो ओवरऑल लैंडस्केप था उसमें ह्यूमैनिटेरियन को एनेक्सेशन हुई थी SPO की। तो ये एक वो ट्रांजिशन था स्टार्ट में। अभी जो ग्रोथ है, जब मैंने 2022 का देखा तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम बहुत बड़े स्केल पे था, लेकिन हम लिमिटेड रिस्पांस में थे, वो भी पार्टनर लेड था, फोकस था। तो SPO को जो स्टार्ट हमारी पार्टनरशिप थी वो सिंध से हुई, तो फिर हम एक्सपेंड कर रहे थे बलूचिस्तान में। तो SPO के पास स्केल देने की वो सलाहियत है, अपॉर्चुनिटी है, और वो बहुत क्विकली हम फिर SPO के साथ ही मूव कर गए बलूचिस्तान में। जो क्रिटिकल सेक्टर्स थे वो जहाँ पे हम काम कर रहे थे, वॉश, फूड एंड इकनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन का थोड़ा सा इस दफ़ा हमने ये किया था कि उसको हमने स्टैंड एलोन भी रखा था और क्रॉस कटिंग भी रखा था। जो स्टैंड एलोन था उसमें SPO की सबसे मेरे ख्याल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी थी, इम्पैक्ट भी था। ग्राउंड पे हम होते थे, अच्छी टीम है। इस टाइम पे मैं, जो लोग नहीं हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो स्टार्ट में SPO की टीम का हिस्सा थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। अभी अगर हम इसको देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है SPO के साथ कि वो एज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ नेशनल एंटिटी लीड करें। जो ह्यूमैनिटेरियन लैंडस्केप है, हमारा इकोसिस्टम है, और इसमें हमने एक कोशिश की थी ऑक्सफैम की तरफ से कि एक नेटवर्क बने। वो चेंज के नाम से एक नेटवर्क बना था और SPO के पास ही वो लीडरशिप थी। तो अगर वो इस तरह की सिचुएशन मूव होती है तो मेरे ख्याल में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल यहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में आए, मेरी पर्सनल ख्वाहिश होगी कि जो नेशनल एंटिटीज़ है वो इस लेवल पे हो कि हमें किसी एक्सटर्नल फिर सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Ahmad Asab, you come from a different background from the rest of the panelists, so it will be very much interested in hearing your thoughts, the way you see SPO's work and future. Thank you very much for inviting, and congratulations for achieving so much and excelling in the independent social work sector. Especially thanks to our Farmaza Saiba and Senator Javed Jabaz Saab, who has always been very kind, and we hold him in high esteem. So I represent a commercial organization which core function and responsibility is to actually maximize profit for the shareholders and to make sure that the money that we earn is spent or it is paid out in the form of dividends to the shareholders. Initially, OGDCL, a bit of an introduction, Pakistan's largest taxpayer in the public sector. So, by virtue of being a public sector organization, being at the top, obviously, it is
It involves a lot of hard work from and an enabling environment and certain challenges. At the same time, opportunities, grabbing them at the right time. So to begin with, our social work or CSR was precisely an obligation in the form of agreements that we have with the government. And we thought that once we pay that amount or we transfer the amount to the respective district governments where we operate, we have done our bit. So starting from that mindset, then understanding our responsibility towards communities where we operate, where our business operations are focused, our responsibility towards the society as a whole, towards the environment. So that was a journey, that was the maturity that organizations like OGDCL and similar organizations in the corporate sector, they started understanding. So today, we do not look at our contractual obligations towards social welfare that we have with the government, but today OGDCL actually understands its responsibility in terms of its operations, especially a company which deals with hydrocarbons, with fossil fuels, its responsibility towards the environment, its carbon footprint, and as a result, how it sees Pakistan going into the future, and especially the challenges in terms of the climate change. So as part of that, today we have a full-fledged department which deals with CSR. 1% of the pre-tax profit is now earmarked for CSR activities. There is a focus on need assessment where we operate. There is a focus on impact assessment once we have funded a particular initiative. The board of directors has constituted an ESG committee especially to focus on our CSR initiatives and also towards our environment. We released our first sustainability report this year, which was the first ever public sector entity releasing a sustainability report, and going forward, we are going to internalize it, make it part of our company's culture and DNA, inshallah. Wherever we are operating, and especially interacting with the independent sector, what is important for us is to partner with, to engage with authentic and reputable organizations. So I'm very comfortable and I'm assured, and my team is also assured, that when we partnered with SPO, we were very confident that we are interacting and engaging with an authentic partner and a partner of repute. So the project that we which is worth mentioning is construction of houses for the most vulnerable people who were affected by the flood. And if this intervention was not made through SPO, maybe they would never have been able to rebuild their houses, at least in the near future. So that was the first flagship program that we had with SPO. And the feedback that I got, it is outstanding. The quality of work which we were expecting, and actually the result which we envisaged. So on all fronts, I'm happy to share that SPO was able to discharge that in a remarkable way. So going forward, we are also engaged with SPO on our upcoming CSR projects, and I think this relationship will augment and flourish with every passing day, and absolutely no doubts about that. While I was not aware as such of the rich history of SPO and the performance and the progress that it made. So I think from an implementing partner to a management partner, that is definitely going to benefit the sector, especially against the backdrop of rich experience that they have achieved after having direct interaction with the communities and the most vulnerable. So I think that experience is going to be beneficial once they undertake this management role. So that is from my side. Thank you, sir. We can assure you the way corporate needs are evolving from community-based CSR to ESG, looking at multiple stakeholders, particularly the capital providers. SPO is very well equipped to
take care of a lot of these needs, and we look forward to flourishing this partnership further. So, ladies and gentlemen, in interest of time, we will not take questions from you. So, please, अगर आपके पास सवालात हैं, तो keep them for the tea or dinner break. And I thank you, my esteemed panel, for taking time out to be here, celebrate, this, be part of this celebration, and within that, be part of this panel. We greatly appreciate your partnerships and the support that we have gotten from you over the years. Thank you very much, Ji. Thank you, Somra Saab. I must say, thank you, Somra Saab. I must say you've done a great job managing time, and thank you, the esteemed panel. बहुत बहुत शुक्रिया. Now, ladies and gentlemen, we will zara double speed pe chalayenge the rest of the ceremony. This is a very important part of the ceremony that we are entering into. As Aksab was mentioning, and he was telling you about the partnership of OGDCL with SPO. We have a small little soft launch ceremony in which we are going to acknowledge the work, the partnership of SPO and OGDCL. But before we enter into that, I would request my production panel to please play a short video to bring everyone on the same page. हमारा नाम सिमरन है, हमारा गांव का नाम हिंदू बिरादरी है। और वो जीडीसी वालों का शुक्रिया। हम पहले झोपड़ियों में थे, उसने पक्का मकान दिया हमको। अंदर पक्का है, बैटरी है, सोलर है, और किचन हमको मिल गया। उधर खाने पीने का सारा सामान रखते हैं। और लेटरिन हमको मिला है, और मोटर हमको मिल गया। उसमें साफ 24 घंटे पानी रहता है। पक्का रोड हमको मिला है, सीढ़ी हमको मिल गया, दरख्त हमको मिला है। और जीडीसीएल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उसका धन्यवाद। जैसे कि आपने अब एक नई पार्टनरशिप है, जैसे कि सोमर साहब के पैनल में भी आपने सुना एसपी और ओजीडीसीएल के माबैन, एंड वी लुक फॉरवर्ड, जैसे कि साहब ने कहा, सच एंडेवर्स टू कम एंड टू फॉलो। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जावेद जब्बार साहब से, आरिफा मजहर साहिबा से और लक साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएँ और हम स्टेज पे इस कम्युनिटी के नुमाइंदा के तौर पे एक खातून को बुलवाना चाहेंगे और OGDCL की जानिब से अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप ऑफ SPO जो 30 घर बना कर दिए गए जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट है, उसमें से एक घर की सिंबॉलिक चाबी, एक्चुअल चाबी दी जा चुकी है। हम देना चाहेंगे जमुना को। जमुना जैसा कि आपको मालूम है हिंदू गोड जाफराबाद की मुकीम है और साइबान प्रोजेक्ट जो OGDCL का है, इसमें एक घर इनको भी बना के दिया गया है आउट ऑफ 30।
ये सिलाई कढ़ाई का बहुत खूबसूरत काम करती हैं। इनका पूरा घर बह गया था और इनकी पूरी फैमिली के लिए OGDCL ने अलॉन्ग विद SPO साइबान प्रोजेक्ट के तहत जुमना बीबी को और 29 दूसरी फैमिलीज़ को घर बना कर दिए। जी नीलूफर, आप सब ख़वातीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए। और लक साहब आपको 1 मिनट के लिए हम इधर बुलाएंगे सिलेबस से हट के। मुझे पर्चा कहा गया था कि आउट नहीं करना और आपको स्पॉटलाइट में लेके आना है। इफ़ यू कम एंड ज्वाइन मी राइट हियर। और SPO की पूरी जो फैमिली है वो ये सवाल करना चाह रही है आपसे कि जाफराबाद में तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ एज अ पायलट, सो व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर है और स्पेशली जिस जगह पे हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग प्रपोजल्स फ्रॉम SPO एंड इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप जो है दिस वाज नॉट लिमिटेड टू वन प्रोजेक्ट, दिस इज़ गोइंग टू सॉर्ट ऑफ flourish, augment and expand in the coming days, months and years inshallah. And so we are now closely engaged with SPO for all small projects. इसमें जो SOS villages के ऊपर भी inshallah that is in Tharpakar and Rahimyar Khan, so that is coming up and Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you and we all wish you good luck. ख़वातीन हज़रात, अब हम तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। ये तो एक सॉफ्ट लॉन्च थी, लेकिन अब हमने कुछ रेजिलियंस अवार्ड्स की जानिब बढ़ना है और इनका नाम रखा गया है अज़्म, हौसला और हिम्मत अवार्ड्स। अज़्म, हौसला और हिम्मत अवार्ड्स। और इन अवार्ड्स को आप तक अनाउंस करने के लिए SPO की एक और लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्त पैशनेट वर्कर समीना खान साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे स्टेज पे ज्वाइन करें। समीना, as most of us, almost every one of us knows, she's a very long-standing development professional. ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है समीना का और ये GB से मेंबर हैं SPO के बोर्ड की। समीना, आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, so please join me on stage to announce these 4 Resilience Awards. जी समीना, आप इधर यहाँ मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से और मैं ये भी साथ साथ चाहूँगा कि हम स्टेज पे आने की दावत दें जनाब अब्दुल कबीर काजी साहब को, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर SCF, कि आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ ताकि ये अवार्ड दिया जा सके। Since 2016, the strengthening participatory organization SPO has partnered with Sindh Education Foundation to enhance educational opportunities for marginalized communities in Sindh. This collaboration encompasses both formal and non-formal education initiatives, ensuring access to quality learning for children, adolescents, and adults. Key initiatives including increased enrollment, establishing interactive learning environments, providing essential learning materials, and implementing sustainable energy solutions. Samina, ये award किसको दिया जा रहा है?
पहले तो हम बुला रहे हैं असदुल्ला बलोच को। असदुल्ला बलोच आगे, हाँ जी। को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और असदुल्ला बलोच जो हैं वो थुल के हैं, डिस्ट्रिक्ट जैकोबाबाद के, और इनका काफ़ी मुश्किल हालात थे। अच्छा, मुश्किल हालात थे इनके, और फिर इन्हें क्या किया कि छोटे इनके 10 फैमिली मेम्बर्स थे, और 10 फैमिली मेम्बर्स थे, और उनने फिर एसपीओ ने के जो स्कूल था वहाँ मिडिल स्कूल मोहम्मद पाना चना, हाँ असदुल्ला मेरी आप सही करें अगर मैं गलत, पाना चना, उधर उनने प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट की उनने, और फिर वहाँ उसके बाद वो आगे गए उधर, क्योंकि बहुत शौक़ से पढ़ रहे थे, तो इनको चूज़ किया गया कि इनको स्कॉलरशिप पे डॉक्टर A.Q. खान स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज इस्लामाबाद भेजा जाए। अच्छा, वहाँ जब गए तो 9th और 10th ग्रेड में 85% इनके मार्क्स आ रहे थे। बहुत शौक़ से ये हैं। वाह। और अब सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में उनकी जो चाहते हैं फ्यूचर के लिए, वो केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, और इनकी वजह से इनके अब आगे जो बहन भाई हैं वो भी आगे पढ़ रहे हैं, और SPO और SEF जो है उनको बहुत ये शुक्र करना चाहते हैं उनका, SEF का, सेक्स एजुकेशन फाउंडेशन का। बहुत मुबारक हो आपको असदुल्ला बलोच। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिस ग्रास रूट लेवल की हम अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी बात कर चुके हैं, या सब हमारे पार्टनर्स ने भी बात की, वो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल आपको असद जैसे लोगों में नज़र आता है, और यही वही खूबसूरत चीज़ है जिसका मरहूम आबिद रिजवी साहब वीडियो में भी बात कर रहे थे कि जो SPO की गाड़ी सामने आ जाती थी, चाहे पहला साल था तो लोग कहते थे ये SPO की गाड़ी है। सो ये ट्रस्ट पहले साल से ही पिछले 30 साल में SPO ने डेवलप किया। अब हम दावत देना चाहेंगे पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड की जानिब से रिजवान शेख साहब को